Hello everyone and welcome back to the channel. I am Sejal Agrawal and today we'll be breaking down three major stories shaping India right now. So in our first story, we'll talk about Grow's quarter 2 FY26 result, which is a mix but surprisingly resilient quarter where strong user activity and new lending products helped offset a year-on-year dip in revenue. In the second story, we look at SEBI's big push to reform India's REIT ecosystem from allowing early stage project exposure to preparing REITs for entry into major winning. And finally, in our third story, we'll cover how the markets reacted to Adani winning the takeover of Jaiprakash Associates and why JP Power's sharp fall today is simply profit booking after a massive 2 day rally. So let's dive in and read about these stories in detail. तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रो के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। न्यूली लिस्टेड फिनटेक जाइंट जिसने पोस्ट किए अपने मिक्स्ड बट ओवरऑल रेजिलिएंट परफॉर्मेंस इन इट्स क्वार्टर 2 FY26, कंपनी ने रिपोर्ट किया है 12% year-on-year rise in consolidated net profit to 471 crores. Even revenue from operation drop किया 9.4% year-on-year to 1019 crores, but sequentially revenue actually jump किया 13%. अब व्हाट ड्रोव दिस टर्न अराउंड मेनली इज रेवेन्यू ग्रोथ के दो मेन रीजंस थे, स्ट्रॉन्ग न्यू कस्टमर एडिशंस एंड हायर एक्टिविटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर्स अक्रॉस स्टॉक, एसआईपी, ईटीएफ्स एंड न्यू लेंडिंग प्रोडक्ट्स. इनफैक्ट 13% जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू था उसमें से 4.5% आया था फ्रॉम न्यूली एक्वायर्ड यूजर्स व्हाइल द मेजॉरिटी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स. EBITDA की बात करें तो it was also strong. Operating profit rose 10% year-on-year to 604 crores. EBITDA margin expanded sharply to 59.29% compared to 48.88% last year, which was one of the best margins in the entire broking industry. सिर्फ एक जो वीक स्पॉट था that was net income which slipped 7.7% year-on-year. Now on the operational side, Groww ने स्केल किया है aggressively. प्लेटफॉर्म अभी 19 मिलियन ट्रांजैक्टिंग यूजर्स पे है, which is up by 5% quarter on quarter and 27% year on year, and total consumer assets climbed to 2.7 lakh crores, rising 33% year on year, which shows deeper penetration of mutual fund, stock and LAS. यूजर बिहेवियर की बात करें तो वो भी शिफ्ट हो रहा है. More customers are now starting their journey with long-term investing products. 36% of new users were SIP first, up by 7 percentage points year on year. Then stock first users fell to 37%. ETF first users jumped to 6 times. IPO first users doubled year on year to 6%. और एक और जो ग्रोथ पिलर जो इमर्ज हुआ दैट वाज लेंडिंग, क्योंकि ग्रो की जो इन हाउस एनबीएफसी है दैट इज ग्रो क्रेडिट सर्व, इट सॉ 1444 million disbursements in quarter 2, growing 58% quarter on quarter. और इसका एक काफी बड़ा बूम जो कि 36% of quarter 2 disbursements था, it came from loan against securities which Groww introduced this quarter. So the company mentioned that Wisdom recently acquired wealth platform is expected to add 3 to 4% to the revenue of the company. Also following the earnings announcement, stock ने positively react किया, it rose 5%, but then it closed with less than 1% gain. Now let's move to the second story, which is कि SEBI gear up कर रहा है for one of the biggest reform cycles in India's real estate investment trust, which is REIT ecosystem. And speaking of the at the National Conclave on REIT and InvITs, सेबी के जो चेयरमैन है तुरुन कांता पांडे, उन्होंने ये बोला कि अभी दो प्रायोरिटीज है मेजरली. एक कि लिमिटेड एक्सपोजर को अलाउ किया जाए टू अर्ली स्टेज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड प्रिपेयरिंग द रोड मैप फॉर REIT टू इवेंचुअली एंटर मेजर स्टॉक इंडाइसेस. अभी जो REIT है मोस्टली ये होल्ड करते हैं कंप्लीटेड इनकम जनरेटिंग एसेट्स, बट टू हेल्प डेवलपर्स एंड डीपन द मार्केट, सेबी कंसिडर कर रहे हैं कि वेदर REIT कैन include a defined capped share of under construction or greenfield project. And पांडे जो चेयरमैन है उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि इन्वेस्टर सेफली उनकी मेजर प्रायोरिटी है, कि जो भी चीज हो वो इन्वेस्टर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए की जाए. एंड दिस मीन्स कि REIT आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडिया के रियल एस्टेट लाइफ साइकिल में, but only with guardrails to ensure the steady rental yields that investor expects are not compromised. Also, SEBI is also examining how REIT can be included in India's major
इक्विटी इंडाइसेस। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो इंडेक्स इंक्लूजन है वो टिपिकली अट्रैक्ट करता है लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स और ग्लोबल ईटीएफ्स के लिए। And for inclusion, जो REITs है, it will need to meet certain conditions like minimum asset size comparable with existing index constituents, sufficient public shareholding, and strong liquidity. Also, SEBI explore कर रहा है एक glide path approach, जिसका मतलब है कि index inclusion gradually होगा after the REIT meet defined thresholds. ऑल्सो चेयरमैन ने हाईलाइट किया कि ये रिफॉर्म्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म इंफ्रा और अर्बन डेवलपमेंट है, दैट नीड इज मैसिव। एंड अकॉर्डिंग टू NABFID, कंट्री को अभी अराउंड 700 ट्रिलियन चाहिए, 700 ट्रिलियन इन करोड़ सेक्टर इन्वेस्टमेंट चाहिए बाय 2047। एंड रीट्स एंड इन्वेट्स इसमें काफी ज्यादा क्रूशियल गैप प्ले करेंगे अगर वो फाइनेंशियल गैप को फिल कर सके। इसके अलावा जो इन्वेस्टर पेनिट्रेशन है, it remains extremely low. Only about 1% currently participates in REITs and InvITs. Still, India has emerged as the fourth largest REITs market in Asia, with 24 listed InvITs and a combined REIT plus InvIT asset base of 9.25 lakh crores as of October. तो सप्लाई को बूस्ट करने के लिए सेबी अभी इनकरेज कर रहा है गवर्नमेंट लिंक्ड एंटिटीज को कि वो अपने पब्लिक इन्विट्स को लॉन्च करें। Also, पांडे ने ये नोट किया है that organizations like NHAI, which are not listed, they can significantly expand the market by issuing InvITs. Also, SEBI coordinate कर रहा है with the Finance Ministry to accelerate India's public asset monetization pipeline, which is a major catalyst for this sector. And now, in the third and last story, we'll be talking about Adani Group, who has won the creditors' approval to take over the bankrupt Jaiprakash Associates with a 14,535 crore resolution plan, beating the heavyweights like Vedanta and Dalmia Bharat. ऑल्सो आज की स्टोरी ये है कि मार्केट में एक मूव देखने को आया जहां पे जेबी पावर अराउंड 7% तक डिक्लाइन हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सो बेसिकली जो शेयर्स हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स के, काफी 2 दिन की एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद आज वो 7%, कल वो 7% इंट्राडे गिरे थे। और ये जो फॉल था, इट वाज लार्जली ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग, especially after the stock had jumped 22.6% the last 2 sessions. और ये पूरा driven था by the optimism around the Adani resolution. And even after yesterday's session, JP Power अभी भी 12% up है in the past 5 days, 36% up है in the 6 months and 12% year to date. अब अगर हम बात करें कि why was the stock rallying, तो ये जो सर्च था जेपी ग्रुप के स्टॉक्स में, ये आया था जब एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ओवरवेलमिंगली अलाउ किया था कि 89% जाएगा इन फेवर ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस टू टेक ओवर द एंटायर जेपी एम्पायर अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अडानी ने आउटबिड किया वेदांता को और डालमिया भारत को डिस्पाइट वेदांताज हायर ऑक्शन ऑफर। बट क्यों? बिकॉज जो लेंडर्स हैं उन्होंने प्रेफर किया हायर अपफ्रंट कैश, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड फास्टर रिकवरी। और अडानी ने इन तीनों चीजों पे हायर स्कोर किया था। ऑल्सो द सीओसी हैज नाउ इशूड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू अडानी सेटिंग द स्टेज फॉर द फाइनल ट्रांसफर। नाउ टू अंडरस्टैंड कि आज का ये मार्केट रिएक्शन क्यों था, वी नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। जो जेपी ग्रुप है, इट वाज वंस इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रा कॉन्ग्लोमरेट। अपने पीक पे 2008 में ग्रुप अराउंड 56,000 करोड़ वर्थ के उसके पास इंटरेस्ट थे, डैम्स, पावर जनरेशन, एक्सप्रेसवे, सीमेंट, रियल एस्टेट, एवरीवेयर। But a mix of debt-fueled expansion, delayed real estate projects, political issues and massive cash flow mismatches की वजह से ये ग्रुप काफी ज्यादा फाइनेंशियल ब्लैक होल में चलता गया। And it finally landed in the insolvency process with around 57,185 crores of loan defaults and over 57.5 crores of claims across lenders. But even इतने ज्यादा डिस्ट्रेस के बाद भी जो ग्रुप के assets हैं, they were hugely valuable, attracting bids from Adani, Vedanta and Dalmia Assets, Jindal and Oberoi. अब अगर हम अडानी के इंटरेस्ट की बात करें तो ये कोई रैंडम इंटरेस्ट नहीं है, इट्स अ प्लान्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, क्योंकि जेपी के पास जो सीमेंट प्लांट्स हैं, लाइमस्टोन माइंस हैं, मैसिव लैंड पार्सल्स हैं, ये इंस्टेंटली अडानी की जो अंबुजा रॉ मटेरियल का बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड नॉर्थ इंडिया की कैपेसिटी को एनहांस करने में हेल्प करेंगे। Also, JP Engineering, EPC, Power Assets and NCR Real Estate plug directly into Adani's infra and energy ecosystem. So overall, it's a rare synergetic deal where Adani gets high value assets at stressed valuation while lenders secure faster recovery. So overall, ये काफी ज़्यादा strategic move है rather than it's a random move. So that was all for today's market update and
Overall, we covered three news. On one hand, we covered Groww ka quarter two ka performance, then SEBI's push for REIT reforms, which signals a major shift in India's real estate and infra funding landscape. And finally, JP Power's sharp dip today is nothing more than a classic profit booking with a broader Adani led revival story. Tell me in the comments what do you think about today's story, and do like and share this video. See you tomorrow with another episode of Daily Market Rundown.